now today let's start with chapter number 8, window 10, getting started. So in this chapter, I will tell you about the window 10 and you will get a welcome screen, the time and date after installing an window. Right, the screen lets you choose which user you want to log in from the lower left corner. You will see window desktop after choosing as a window desktop दिखाई देगा. यहाँ पे आप choose कर सकते हो. You can enter the password if necessary. Right? So that window desktop is simply our operating system main screen and the access to an array of the tool like start menu, taskbar and icon. So window 10 introduces such box in the taskbar जो क्या facilitate करता है browsing both your computer and the web. GUI, graphic user interface, basics of window 10. So when you get to the window desktop screen, here are some basic features. The taskbar एक long rectangular strip है जो bottom of the screen पे होता है, right? It shows all the windows that are open but minimized. सबसे important part है desktop का in the taskbar and it sits at the bottom of a screen and give access to the start menu. ठीक है, ऐसा आपको several program दिखाई देते हैं. So window 10, if an application is active or open, you will see a green line. अगर एक्टिव है ओपन है आपको ग्रीन लाइन दिखेगी. क्लिकिंग ऑन द आइकन विल ब्रिंग द एप्लीकेशन विंडो. अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर दिखाई देगी. रिसाइकिल बिन इज लाइक अ डस्टबिन इनटू व्हिच यू पुट ऑल द डाटा दैट यू डोंट वांट. व्हेन यू गिव द कमांड टू द कंप्यूटर टू डिलीट तो आपका कहाँ चला जाता है रिसाइकिल में चला जाता है. एवरी ओपन विंडो फीचर्स हैज 3 बटन इन द अपर राइट कॉर्नर. ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज. मिनिमाइज मतलब जब आपको हाइड करना है विंडो को टास्क बार से. मैक्सिमाइज मतलब जब आपको फुल स्क्रीन पे दिखा. राइट, विंडो कैन बी मूव्ड अराउंड और रीसाइज. टू मूव अ विंडो जस्ट यू विल क्लिक ऑन द टाइटल बार ऑन द अपर साइड ऑफ द विंडो एंड यू विल ड्रैग. रीसाइज करना है आप उसके कॉर्नर को क्या करोगे ड्रैग करोगे विद द डबल साइडेड एरो. Then we have icons. Most window version will features different icons. So an icon is simply a graphic representation of application or file. To open or access an icon, you will just double click. So steps has been given. Right click on the desktop background, choose new and shortcut. Browse the application or file that you want to create a shortcut. Now step 4, assign a name of the shortcut. Just a finish. So icon can also be moved around by clicking on them and dragging them to another place on the screen. Now desktop background. So we can say another component of a desktop is the background. This is simply an image that appears at the back of it. अगर आपको background को change करना है तो आपको कुछ steps follow करने हैं. Right click on the background and choose personalize. From the personalization window, choose from the series of pre-selected pictures or browse for your own. After choosing a picture, background जो होगा आप जो भी चूज करोगे इसमें से चूज करो. कोई आपको अपनी डेस्कटॉप पे से चूज करना है तो आप वहां से भी चूज कर सकते हो. एंड यू कैन जैसे आप उसको करोगे लगाओगे योर बैकग्राउंड विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर सेलेक्टेड वन. राइट, दिस इज हाउ यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ. क्लिक द करेक्ट ऑप्शन. One of the most important part of our desktop, that is window. Taskbar is a long rectangular strip at the bottom of the desktop. In window 10, the application is active. You will see, अगर active है तो आपको क्या दिखाई देगा? Green light. In window 10, minimize means to hide a height that the window. Now fill in the blank. Desktop is simply your operating system main screen. So window desktop. Clicking the dash will break application. Clicking the icons. The recycling bin is like a dustbin. Another component of a dash is the background. JD. Now unstamble the following words. This is your taskbar. Windows.
icons, application, right? Now write T for true and F for false. The taskbar is a short rectangular strip at the bottom of this. Long होती है, not short. To open or access an icon, just single click on. आप तो open करें, double click. Window tile introduces a search box in the taskbar. It's true. Minimize beam window will be hidden in the taskbar. It's true. Now answers are following question. What can you find on the taskbar? आपको 3 ऑप्शन आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देते हैं. जितने भी ओपन आइकन्स हैं वो दिखाई दे. What do you mean by window 10? आपको what the search box in the taskbar facilitate. So when you will get a welcome screen with the time and date in the window, जब आप क्या करोगे आपकी विंडो आपका डेस्कटॉप अपीयर हो. ठीक है, विंडो आपकी अपीयर होगी डेस्कटॉप. Right? This is all about in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.